A very great morning, students. Today we are going to start exercise 3b of the chapter 3. Name is square and square root. In previous video we have discussed about the square, perfect square number and the properties based on perfect square number. So let's quickly start our exercise 3b. Our question number 1 is, give reason to show there is a two parts 5372 and the second one is 360 is not a perfect square. As we have discussed about the properties of the perfect square number. Your first property is a number ending in 2, 3, 7 or 8. It means that suppose you have a digit like 232. A number ending 232, ending digit is to a number ending 2, 3, 7 or 8 is never a perfect square. जिन भी नंबर के एंड में 2, 3, 7 और 8 होता है वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होते. एंड योर सेकेंड प्रॉपर्टी इज अ नंबर एंडिंग इन एन ऑड नंबर ऑफ जीरोज. देयर इज वन वर्ड ऑड नंबर ऑफ जीरोज. एज यू नो दैट ऑड नंबर्स ends with 1, 3, 5, 7, 9. A number ending in an odd number of zeros. किसी भी नंबर के एंड में अगर ऑड नंबर ऑफ जीरो हैं तो वो नंबर भी कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते. योर फर्स्ट डिजिट इज 5372. Ending digit is 2. And according to the first property, a number ending 2, 3, 7 or 8 never be a perfect square. Here the ending digit is 2. So 5372 is not a perfect square number. Again in 360, number of zeros. कितनी जीरो है यहाँ पर? 1. एंड 1 इज एन ऑड नंबर ऑफ जीरोज. आपको पता है 1 एक ऑड नंबर है और यहाँ पर कितनी जीरो हो गई हैं? ऑड नंबर ऑफ जीरोज हो गई हैं. देन 360 इज ऑल्सो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. Your question number 3 is, which of the following are squares of even and odd numbers? There are two numbers are given, 484 and second one is 961. And we have to check that these two numbers are the squares of even and odd numbers. As we know that about the even number, a number ends with 0, 2, 4, 6 or 8. A number ends with 0, 2, 4, 6 or 8 are called even numbers. And the odd numbers are a number ends with 1, 3, 5,
7 and 9. There are the two numbers you can see, 484 and 961. And we have to check these two numbers are square of even and odd numbers. Your first digit is 484. One's digit is 4. तो आपको पता है 4 कैसा नंबर है आपका, इवन नंबर है. And we know that the square of an even number is always be an even number. So one's digit is even and the square of the even number is again even. So 484 are the square of even. Next one is 961. One's digit is 1. अब 1 कैसा नंबर है हमारा, odd. So 961 are the squares of the odd. क्योंकि अगर आप odd नंबर का स्क्वायर लेते हैं तो वो भी हमेशा क्या आता है हमारा, odd. And 961 is an odd number, then its square will be also odd number. Next question is question number 4. Without adding, find the sum. There is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 odd numbers. आप देख रहे हैं 1 भी कैसा नंबर है, odd. 3 भी odd नंबर है, 5 भी odd नंबर है, 7 भी, 9 भी, 11 भी and 13. There are 7 odd numbers and without adding we have to find their sum. बिना ऐड किए हमें इनका क्या फाइंड आउट करना है, सम. Yes, according to the property of the perfect square number, for every natural number n, every natural number n, sum of first and odd natural numbers, first and odd natural number. First means all the odd numbers started from the 1. So sum of all the odd natural number we can write it as n square. What do you mean by n? n यहाँ पर है क्या चीज, n is number of first odd natural numbers. जो यहाँ पर n है हमारा नंबर ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स है. You can count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. कितने ऑड नंबर हैं यहाँ पर, 7. So value of the n is 7. And sum of first n odd natural number is equals to n square. Value of the n is 7. So it will become 7 square. And you can expand as 7 multiply 7. It will be equals to 49. So sum of these odd natural numbers is equals to 7 square. It will be equals to 49. Your next question is question number 5. Express 81 as the sum of 9 odd numbers. We have to express 81 as the sum of 9 odd numbers. As we know about the odd numbers like 1, 3, 5, 7, 9 and so on. And according to the question, we will take 9 odd numbers
9 odd numbers are 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 and 17. There are 9 odd numbers and we have to express these odd numbers as the sum of 9 odd numbers. We have given number 81. Your first odd number is 1. 81 minus 1 is equals to 80. Now you have obtained 80 and your second odd number is 3. That is 77. Your next odd number is 5. Then 77 minus 5 is equals to 72. Again your next odd number is 7. 72 minus 7 is equals to 65. Next odd number is 9. 65 minus 9 is equals to 56. Next odd number is 11. 56 minus 11 is equals to 45. 45 minus 13 is equals to 32. 32 minus 15 is equals to 17 and 17 minus 17 is equals to 0. We have 9 odd numbers. आपके पास 9 odd numbers है and we have to express 81 as sum and we have to express these odd numbers as the sum of odd natural numbers. Your first odd number is 1. We will take sum, that is plus. Second one is 3. Third is 5. Fourth is 7. Fifth is 9. Sixth is 11. Seventh is 13. 8 is 15 and 9 is 17. तो यहाँ पर कितने odd numbers आ गए हमारे 9 and we have to express these 9 odd numbers as a sum that is equals to 81. We can write it 9 square. Your next question is write a Pythagorean triplet. In previous lecture we have discussed about the triplet. Triplet means 3 whose smallest number is 6. ट्रिपलेट में कितने नंबर्स होते थे हमारे 3 बट वी हैव ओनली वन स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज इक्वल्स टू 6 एंड वी हैव टू फाइंड रिमेनिंग 2 नंबर्स और हमें क्या फाइंड आउट करना है 2 नंबर फाइंड आउट करने हैं क्योंकि पाइथागोरस ट्रिपलेट में कितने नंबर्स होते थे हमारे 3. सो अगेन अप्लाइंग द प्रॉपर्टी ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर फॉर एवरी नेचुरल नंबर m ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1. अगर m की वैल्यू 1 से ग्रेटर है वी हैव 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1 एज द पाइथागोरन ट्रिपलेट. तो जो भी हमारे पाइथागोरन ट्रिपलेट होंगे ट्रिपलेट मीन्स 3 जो पाइथागोरस में 3 नंबर्स आएंगे वो किस फॉर्म में होंगे 2m m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1. व्हाट डू यू मीन बाय m? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द m? द वैल्यू ऑफ द m विल बी स्मॉलेस्ट गिवन नंबर. तो हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर क्या गिवन है 6. दैट इज इक्वल्स टू 6. योर फर्स्ट नंबर इज 2m. 2m इज इक्वल्स टू 6. देन वैल्यू ऑफ द m विल बी इक्वल्स टू 3. एंड योर सेकेंड नंबर इज m स्क्वायर माइनस 1. वैल्यू ऑफ द m नाउ इज 3 square minus 1 that is equals to 9 minus 1
which is equals to 8. And your third Pythagorean triplet number is m square plus 1, and the value of the m we have obtained, m square plus 1, value of the m is 3, 3 square plus 1 is equals to 9 plus 1, that is equals to 10. So we have another two numbers that are 8 and 10. So 6, 8, 10 are the required Pythagorean triplet numbers. Your next question is question number 8. Using the formula, you have a formula a plus b square is equals to a square plus 2ab plus b square. You have a given formula, that is a plus b whole square is equals to a square plus 2ab plus b square. Then we have to evaluate 310 whole square. The one question is arising, there are the two numbers a and b. अब हमारे पास दो नंबर हैं a and b, but we have only one number 310. Then what is the value of a and b? तो a और b की वैल्यू क्या होगी? Firstly, we will express 310 as the sum of two natural numbers. You can expand 310 as 300 plus 10, and there is whole square. Then we have now two numbers. Value of the a is 300 and value of the b equals to 10. And we have formula a square plus 2ab plus b square. Value of the a is 300, 300 square we can write, plus 2, ab multiply, value of the a is 300 and value of the b is 10, plus b square, value of the b is given 10 whole square. 300 square means 300 multiply 300. It will be equals to 90,000. 2 multiply 300 multiply 10 means 6,000, and 10 square means 10 multiply 10, that is equals to 100. Now we will add these three given numbers. It will be equals to 96,100. So the square of 310 is equals to 96,100. Your ninth question is, using the formula a minus b whole square, a square minus 2ab plus b square. We have a given formula a minus b whole square is equals to a square minus 2ab plus b square. आपके पास एक ये फॉर्मूला गिवन है एंड वी हैव टू इवेल्युएट 196 होल स्क्वायर. अब आप देखो यहाँ पर आपके पास क्या दिया हुआ है, माइनस दिया हुआ है ना, तो 196 को हमने एक्सपेंड करना है a माइनस बी की फॉर्म में. सो वी कैन राइट the nearest value of the 196 is 200. Then 196 can be expressed as 200 minus 4 and whole square. So value of the a is 200 and the value of the b is 4. Applying the formula a square minus 2ab plus b square. Value of the a is 200 whole square minus 2 multiply 200 multiply 4 plus value of the b is 4 square.
200 square means 200 multiplied 200, that is equals to 40,000, minus 2 multiplied 200, 400 multiplied 4, that is equals to 1600. 4 square means 4 multiplied 4, that is equals to 16. Now we will subtract 4000 minus में 1600, that is equals to 40. Firstly we will add 40,000 plus 16, that is equals to 40,016. Now we will subtract 1600 from the 40,016, that is equals to 38,416. So square of 196 is 38,416. Your seventh question is evaluate 75 square minus 74 square. There are two natural numbers. आपको दो नेचुरल नंबर दिख रहे हैं, 75 एंड 74. अब देखो ये 75 एंड 74 दो कैसे नंबर देख रहे हैं? विदाउट गैप. विदाउट गैप दिख रहे हैं ना, तो ऐसे नंबर हमारे क्या होते थे? नेचुरल नंबर एंड कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स. टू नेचुरल नंबर्स विद द स्क्वायर ऑफ दिस डिफरेंस, देयर डिफरेंस. अगर आपके पास कभी भी दो नेचुरल नंबर्स दे रखे हैं विद देयर डिफरेंस, इट विल बी इक्वल्स टू देयर सम. वो किसके इक्वल आता है? उसके सम के. बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर फॉर एवरी नेचुरल नंबर n, वी हैव n plus 1 whole square माइनस में n square is equals to n plus 1 plus n. Suppose we have a number 75 square minus में 74 square. Then what is the value of n and n plus 1? N is the smallest number. You can equate these two equations, then value of the n is equals to 74. आपको n की वैल्यू क्या दिख रही है? 74. And value of the n plus 1 is 75. n plus 1 की वैल्यू तो क्या है? 75. और n की वैल्यू क्या दे रखी है हमें? 74. With the difference of their squares. So it will be equals to sum of these two natural numbers. वो हमेशा किसके इक्वल आएगा? Sum of the given natural numbers. अब नेचुरल नंबर हमारे पास क्या क्या थे? 75 एंड 74. तो इनका क्या ले लेंगे हम? सम. दैट इज इक्वल्स टू 149. I hope students you have understood the exercise 3B and you have to solve these 9 questions in your fair notebook. Thank you and have a nice day.